गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। तो बीएससी सेमेस्टर थर्ड का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है जो कि बेस्ड है टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स। सो इन द प्रीवियस ऑनलाइन और द वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस some terms that are used in the genetics. Today we also discuss some other terms that are used in genetics. So we will start with, so we finished in the earlier classes with the genotype. So in today's class we will start with the phenotype. So phenotype is the external appearance of any character. This external appearance of character, or we can say it is external appearance of genotype. External appearance of genotype for given जीन। किसी भी एक जीन का जो जीनोटाइप होता है उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को या फिर एक्सटर्नली वो कैसे दिखता है, जो कैरेक्टर हमको बाहर से विजुलाइज होता है, तो उस केसेस में या फिर उस कंडीशन को हम कहेंगे फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल capital T capital is the genotype. So it is a genotype of what? Stem height gene. So one of the genotype of stem height gene that can be written as a capital T. So capital T is a genotype, and how it looks externally is the phenotype. So this capital T externally looks tall, or it shows the characteristic of tallness, and this tallness is called as the phenotype. This tallness is called as the phenotype. Similarly, the small t, this is the first. For example, small t is also the genotype, and it externally appears as a dwarf, and hence dwarf or dwarfness is called as the phenotype of that genotype. Phenotype of that genotype. Take other different terms. Now the other terms are used. P. In genetics we symbolized P and for parental generation. In genetics, some symbols we used, some letters we used as symbols. So the P generally used to symbolize the parental generation. So parental generation can be first parental generation, there can be a second parental generation,
there can be a third parental generation, and so on. So these parental generation, first parental generation, second parental generation, and the third parental generation are symbolized as the P1 for the first parental generation, P2 as the second parental generation, P3, and so on. So what is parental generation? The generation or the organisms which donates gametes to form progeny. So generation is called as the parental generation. Then another similar letter or the symbol that we use is the F. F is used for filial generation. Or the generation of progeny. Similarly, as the parental generation can be a first parental generation can be second parental generation, third generation, and so on. Likewise, the filial generation can be the first filial generation, it can be a second, it can be a third filial generation, and similarly, this can be written or symbolized as F1 for first filial generation, F2 for second filial generation, F3 for third filial generation. So what is filial generation? The organism which receives gametes. So the generation or the organisms which receives the gametes from the parents called as the filial generation, and this filial generation can be symbolized as a F1, which means it is the first filial generation. It can be symbolized F2, which means it is the second filial generation, and F3, which means the third filial generation. Then some terms we can use in the genetics. Chromosome. So this definition or this term was given by Strasburger. So Strasburger for the first time gave the term chromosome. The meaning of this chromosome is what? The chromam is color and somam is body. So the colored body which was observed in the nucleus called as the chromosome. So it is highly organized, condensed form of highly organized condensed form of chromatin material. So it is a chromatin material. Chromatin material found during cell division. So this is the physical structure that we observed in the nucleus or while only during the cell division
So this is highly condensed form, or we can observe it as a rod shape. So this rod shaped structure which is found in the nucleus, which can be stained. So this type of structure is called as a chromosome. Observed as a rod shape. तो हमको रॉड के जैसा कुछ कलर्ड एक सब्सटेंस दिखता है न्यूक्लियस में, जिसको नाम दिया गया क्रोमोसोम। अब उसके बाद में हमने देखा कि क्रोमैटिन क्या होता है फिर। सो क्रोमैटिन इज कॉम्प्लेक्स structure formed by DNA and associated proteins. DNA और कुछ प्रोटीन्स जिसको हम कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये जो क्रोमैटिन जो होता है ये आपको थ्रेड के जैसे दिखता है, थ्रेड शेप। तो सिर्फ डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन के हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमैटिन, और वही क्रोमैटिन के हाईली कंडेंस्ड फॉर्म को हम कहेंगे क्रोमोसोम, जो कि सिर्फ हमको किस में दिखता है, न्यूक्लियर डिवीजन में दिखता है, या फिर हम कैरियोकाइनेसिस में जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप्स है ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। Chromosomes are classified तो इस क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप्स है। तो फर्स्ट जो टाइप हम मेनली डिस्कस करेंगे वो है द रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोम का रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में डायरेक्टली है या नहीं है, उसके बेसिस पे जो है क्रोमोसोम के दो टाइप्स किए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम कहेंगे ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स व्हिच डू नॉट प्ले डायरेक्ट रोल, डू नॉट प्ले डायरेक्ट role in the sex determination. Such chromosomes are called as the autosomes. So these characters mainly controls somatic characters. Somatic characters of an organism. For example के तौर पर अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है वो है 46। सो 46 आर टोटल chromosome number. So total chromosome numbers in the human beings are the 46, of which 44 or 22 pairs, 44 chromosomes are 22 pairs are called as autosomes, and these autosomes play important role in the control of somatic characters. Other type of chromosomes which are called as the sex chromosomes.
they are also called as the allosomes, and they are also called as the heterosomes. तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर एलोसोम्स क्या होता है, और हेटेरोसोम्स, जिसको और हम हेटेरोसोम्स भी कह सकते हैं। अपोजिट टू ऑटोसोम्स, इन क्रोमोसोम का जो है वो डायरेक्ट रोल होता है किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में। प्ले डायरेक्ट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एलोसोम्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोसोम्स। फॉर एग्जांपल, X chromosome and Y chromosome. X chromosome usually we used to indicate the female or the female sex, and the Y chromosome is usually used to indicate the male sex. So these are the two sex chromosomes that found in most of the organism, and we are looking it as a common example in the human beings. In human beings, two sex chromosomes are present. One is X and another Y. So X means it shows the female sex, and the Y shows the female male sex. Other terms that are used in the genetics: Homogametic. Second one is heterogametic. Homogametic are those organisms, are those individuals which can produce similar type of gametes. Organisms which can produce similar type of gametes are called as homogametic. For example, in human beings की अगर हम बात करते हैं तो जो फीमेल होती है, ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती है, जिसमें XX दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनसे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट प्रोड्यूस ओनली X टाइप ऑफ गैमेट्स। तो एक ही टाइप के गैमेट्स जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है, जिसमें सिर्फ X क्रोमोसोम होता है, किसके साथ में 22 क्रोमोसोम्स ऑफ ऑटोसोम्स। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स में मेल जो होता है, मेल के पास Z सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये होमोगैमेटिक होता है जो सिर्फ Z टाइप की ही क्या करता है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब सेकेंड हम बात करेंगे किसकी, हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक को क्या हम कौन से इंडिविजुअल्स को हेटेरोगैमेटिक कहेंगे? तो हेटेरोगैमेटिक आर दोज इंडिविजुअल्स और दोज ऑर्गेनिजम्स which can produce two different types of gametes. अभी की क्लास में अभी क्लास में organisms which can produce different gametes.
are called as heterogametic. Example, in human beings, male individuals are heterogametic, having XY chromosome, and they produce two different types of gametes, one gamete containing X chromosome and another gamete containing Y chromosome. So other terms we will discuss in the another video class. Thank you for watching.